بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum and welcome back to another lesson of English subject for grade 3. Students, today we are moving on to the exercise of the poem Playtime. In this we are going to answer the questions in part A. For that you have to open your neat notebook and take out your pencil, razor, sharpener and scale. Take out your pencil, razor, sharpener and a scale. So the first question in part A is, what game is the children playing? What game is the children playing? Okay, what were they playing? They were playing a game of mission, and in that mission they were going to steal gold. They had to get some gold from a secret place. So इट वॉज अ गेम ऑफ इमेजिनेशन. इन्होंने जहन जहन में ही कुछ सोचा हुआ था कि हम जासूस हैं और जासूस कोई मिशन पे हैं. ठीक है, तो द आंसर वुड बी दे वर इमेजिनिंग दैट they were spies on missions. They were imagining that they were spies on a mission. They were spies on a mission. What game is the children playing? They are imagining. वो सोच रहे हैं, इन्होंने रहन में रखा हुआ है कि वो लोग जासूस हैं और एक मिशन कंप्लीट करना है. Their game is spies on a mission. ठीक है, so let me show you how are you going to write this in your neat notebook. हमेशा की तरह आज भी आप लोग अपर मोस्ट लाइन पे HW लिखेंगे क्योंकि ये आप घर पे करेंगे. और प्ले टाइम पोइम का नेम है, इसलिए आप इसके जो सबसे फर्स्ट लाइन है उसमें आप यहाँ लिखेंगे. क्वेश्चन नंबर 1 इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. और इसका जो पार्ट 1 है, पार्ट ए है, वो है व्हाट गेम इज द चिल्ड्रन प्लेइंग. व्हाट गेम इज द चिल्ड्रन प्लेइंग. दे आर imagining that they are spies on a mission. They are imagining that they are spies on a mission. They are imagining that they are spies on a mission. Now let's move on to the next question, which is, what is the mission? What is the mission? What was the mission? Their mission was to get gold from a secret place. अच्छा, क्वेश्चन में है is, तो आंसर में भी हम is लिखेंगे. What is the mission? The mission is to get gold from a secret place. Get gold from a secret place. The mission is to get gold from a secret place. The mission is to get gold from a secret place. What is the mission? The mission is to get gold from a secret place. Now let's move on to the next part, which is part C. Who is the giant beast? Who is the giant beast? Who is the giant beast? The giant beast is the father of the sisters. The giant beast is the father of the sisters. Who is the beast? Who is the beast?
Who is the beast? The giant beast is the father of the girls. The giant beast is the father of the girls. The father of the girls. गर्ल्स लिखें या सिस्टर्स लिखें, वो दोनों आपस में सिस्टर्स हैं, तो आप गर्ल्स भी लिख सकते हैं और सिस्टर्स भी लिख सकते हैं. The giant beast is the father of the girls. Now the next question is, what does the child compare the bushes and the wall to? What does the child compare the bushes and the wall to? मतलब उसने क्या कहा कि बुशेस किसकी तरह लग रहे हैं और वॉल्स किसकी तरह लग रहे हैं. ठीक है, कैसे फील हो रहे हैं या कैसे नज़र आ रहे हैं, किस लिहाज से कैसे भी कंपेयर किया था, आपने बताना है कि किस किस चीज़ के साथ कंपेयर किया है. What does the child compare the bushes and the wall to? The child compares the bushes to wire and the wall to fire. अच्छा, बुशेस और वायर एक दूसरे जैसे लगते हैं, एक जैसे ही लगते हैं. वायर्स के ज़रिए से रास्तों को बंद किया जा सकता है, मतलब वो जो एक किस्म का बॉर्डर जब बनाया जाता है, बॉर्डर में आपने देखा होगा कि जो इस तरह की वायरिंग की हुई होती है, रास्ता जो बंद किया होता है उसके ज़रिए, वो तो ठीक है, इनका कंपैरिजन समझ में आता है. लेकिन वॉल और फायर का कंपैरिजन जो उसने किया है वो इस बेस पे किया है कि वॉल इतनी गर्म है जिस तरह फायर. ठीक है, द वॉल इज़ ग्लोइंग वार्म लाइक अ फायर. ठीक है, तो ये लाइन जो यूज़ की गई थी, तो वहाँ पर बताया गया था कि वॉल जो है, दीवार इतनी गर्म हो चुकी है जैसे आग. अगर नॉर्मली हम देखा जाए तो वॉल और फायर का आपस में कोई कंपैरिजन नहीं बनता, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्म होने की वजह से इनका आपस में ये कंपैरिजन है. ठीक है, द चाइल्ड कंपेयर्स द बुशेस टू वायर एंड द वॉल टू फायर. The child compares the bushes to wire and the wall to fire. Now it's the turn of question E. E. What is the safe place or base? सेफ प्लेस कौन सी थी, महफूज जगह कौन सी थी, या बेस स्टार्टिंग पॉइंट कौन सी थी जहाँ से उन्होंने मिशन स्टार्ट किया था, वो जगह कौन सी थी, या सेफ प्लेस कौन? वो दोनों सेम ही चीज़ जगह थी, जो भी थी वो सेम ही जगह थी. कौन सी वाली थी, कुछ याद है? कहाँ से उन्होंने स्टार्ट लिया था? गार्डन शेड. वेरी गुड, गार्डन शेड. सो व्हाट इज का हम आंसर लिख देंगे, द गार्डन शेड इज. ठीक है, बाकी द सेफ प्लेस और बेस क्वेश्चन ही से लेके इसका आंसर होगा. तो व्हाट इज द सेफ प्लेस और बेस? द गार्डन शेड इज द सेफ प्लेस और बेस. द गार्डन शेड इज द सेफ प्लेस और बेस. द गार्डन शेड इज द सेफ प्लेस और बेस. What is the safe place or base? What is the safe place or base? The garden shed is the safe place or base. The garden shed is the safe place or base. गार्डन शेड आपका आंसर है, बाकी क्वेश्चन ही आपका आंसर है. ठीक है, व्हाट इज़ आप बता देंगे, द गार्डन शेड इज़ द सेफ प्लेस और बेस. ये आपके क्वेश्चन में भी, आप आंसर में भी लिख सकते हैं. नाउ इट्स द टर्न ऑफ पार्ट एफ टू बी आंसर्ड. अब इसकी बारी है कि इसका आंसर दिया जाए. व्हाट इज़ द डार्क लेयर? व्हाट इज़ द डार्क लेयर? व्हाट इज़ द डार्क लेयर? डार्क लेयर का कोई जिक्र आया था वहाँ पर? हाँ, बताया था कि बीस्ट जो है वो अपनी डार्क लेयर में वापस जब हार गया तो वापस डार्क लेयर में चला गया. तो डार्क लेयर कौन सी थी? गार्डन चेयर. वेरी गुड. डार्क लेयर इज द ओल्ड गार्डन चेयर. डार्क लेयर इज द ओल्ड गार्डन चेयर. डार्क लेयर इज द ओल्ड गार्डन चेयर. What is the dark layer? Dark layer is the old garden chair. Dark layer is the
old garden chair. Now we are going to answer part G. Part G. What do the children do to celebrate their win? What do the children do to celebrate their win? What do the children do to celebrate their win? आखिर में क्या किया उन्होंने? They ate apples. They ate apples. लेकिन प्रेजेंट टेंस में पूछा है उन्होंने, तो हम ate नहीं यूज़ करेंगे, eat लिखेंगे. The children eat apples to celebrate their win. The children eat apples to celebrate their win. The children eat apples to celebrate their win. What do the children do to celebrate their win? Children अपनी जीत को कैसे मनाते हैं? वो जो लड़कियां मिशन पे गई थी और जीत कर वापस आ गई, तो वो अपनी खुशी को कैसे मनाती हैं, अपनी जीत को कैसे मनाती हैं? The children eat apples to celebrate their win. The children eat apples to celebrate their win. The children eat apple to celebrate their win. हम पार्टी वगैरह करते हैं ना, जब हम किसी चीज़ में जीत जाते हैं या कोई हमसे ट्रीट मांग लेता है कि आप तो जीत गए हो, अब हमें इस खुशी में कुछ खिलाओ पिलाओ, तो उसमें फिर क्या होता है कि हम कुछ खाते हैं. इन बच्चों ने पार्टी किस चीज़ की? एप्पल्स की. इनकी पार्टी किस चीज़ की थी? एप्पल्स की. द चिल्ड्रन ईट एप्पल्स टू सेलिब्रेट देयर विन. यहाँ पे आज का हमारा लेक्चर ख़त्म होता है. आई होप कि आप सबको क्वेश्चन आंसर्स की समझ आ गई होगी. समझ नहीं भी आई तो आप किसी किस्म का भी कोई भी सवाल पूछ सकते हैं इससे रिलेटेड. हम आंसर ज़रूर देंगे और टाइमली देंगे ताकि आपको टाइम पे समझ आ जाए. किसी भी किस्म का सवाल आपके जहन में हो तो आप पूछ सकते हैं. हमने आज 7 क्वेश्चंस के आंसर्स लिखे नीट कॉपी पे और उसको डिस्कस भी किया. जहाँ कई कन्फ्यूजन बन सकती थी उनको मैंने क्लियर किया. अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन रह गई तो आप सवाल पूछ सकते हैं. आज के लिए इतना काफ़ी है. विश यू बेस्ट ऑफ लक. हैव अ नाइस डे. अल्लाह हाफिज़. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما.